With regards to the magnetic properties, now it's time to discuss about the paramagnetic substances. Paramagnetic, paramagnetism, है ना, property, है ना, in substances. We all know initially that substances which show the diamagnetic property, diamagnetism property, you know that each and every atoms is having zero magnetic moment. There is no magnetic moment at all. But when we go to the substances, those substances which are paramagnetic or paramagnetism property of the property in substances, we find that such substances are having some dipole moment. Every atoms of such substances, every atom of such substances are having dipole moment. Now for example, this is an atom, 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 and this is an atom. So every atom of the substances that is showing this paramagnetic property or paramagnetic substances, they are having some dipole moment. Dipole moments are less, but net dipole moment is present in the atoms. You see, this type of dipole moments are present, and these atoms are having a random direction of the dipole moment. So in this random direction of the dipole moment at say room temperature, at room temperature, है ना, it has random direction of dipole moment, है ना, of each atom. Now if I tell you that what is the total dipole moment now at an instant, what is the total net dipole moment? Now if it is randomly oriented, if the dipole moments are randomly oriented, then we see that m net is equal to 0. Means at room temperature or higher temperature, since they are randomly oriented, hence the net dipole moment is found to be 0. But what happens when this paramagnetic substance is brought in a strong magnetic field, in a strong external magnetic field? So the property is that whenever paramagnetic substances are brought in a strong magnetic field, a strong external magnetic field, then what happens? This substance moves from weaker field part or weaker section of the field to stronger section of the field. These substances move from the weaker section of the field to stronger section of the field. That means you can say that paramagnetic substances are weakly attracted by the magnet. Paramagnetic substances are weakly, first of all, they are what happens? They are weakly, है ना, weakly, WEA, है ना, weakly attracted by magnet. And second is that they move, the substance move from weaker to stronger part of the field, weaker section to stronger section of field. इसका मतलब ये मान लो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये पार्ट को मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्गर सेक्शन बोलूंगा, और इस पार्ट को मैं बोलूंगा वीकर सेक्शन. तो आपके पास अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दिस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आपके पास में है,
then this will move from the weaker section to the stronger section of the field. And if you are having a magnet, for example, say I am having a north pole and south pole magnet, and there is a paramagnetic substance. This is the paramagnetic substance. Paramagnetic substance. Then according to the first rule, it is weakly attracted towards the magnet. The magnet is attracted and this particular substance is also attracted. It is weakly attracted to the magnet. The reason for this is that in the strong magnetic field, these magnetic dipoles, they get aligned along the direction of the field. ये जो आपका जो मैग्नेटिक जो डाइपोल्स है, ये सभी फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन होते हैं. मतलब इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाना चालू कर देता है, जीरो एंगल. मतलब नेट टॉर्क इज जीरो नाउ. तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वहां पर होगा, तो पक्का ये साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल. ये साइड क्या हो जाएगा, साउथ पोल. और देखो नॉर्थ पोल है तो पक्का ये साउथ पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. So this is the mechanism of attraction in the case of the paramagnetic substances. Now here इसके लिए मैं अभी आपको कहूँगा कि paramagnetic substances में कौन कौन आते हैं. Which are the substances that follow the paramagnetic substances? They are aluminium, sodium, calcium, oxygen, and copper chloride. Now here one relationship you should know. Here one relationship is to be known. The relationship is this one, that इसके जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो अलाइन होने से there will the magnetization will come, m will come in the picture. So the relationship is this, m is equal to some constant c into b naught upon t. See, magnetization is inversely proportional to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर मतलब बाहरी टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, देन व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटाइजेशन विल डिक्रीज. क्योंकि वो सभी के सभी जो एटॉमिक डाइपोल्स है वो अपनी अलाइनमेंट तोड़ करके क्या बन जाएगा, रैंडम बन जाएंगे. सो इन दिस केस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, तो इट विल बी फीबली अट्रैक्टेड, वेरी मच नॉट अट्रैक्टेड, एट लास्ट इट विल लीव ऑल्सो. ओके, तो पैरामैग्नेटिज्म लॉस्ट भी हो सकता है. Now here we can say that you can put here m is equal to, you can put x times your h, and b is equal to your mu naught into क्या हो गया, h अगर पुट करते हो तो इस केस में आपको मिलता है कि c टाइम्स योर mu naught h अपॉन क्या हो गया, t. तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से ये आपका h और h कैंसिल हो गया. तो your this magnetic susceptibility is c into mu naught upon t. तो your magnetic susceptibility is also inversely proportional to the temperature. ठीक है, तो this thing should be noted by you. And there is something like this particular this relationship, this is known as the Curie law. याद रहे, Curie law. This relationship is known as the Curie law. And after saturation, now saturation का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा. क्योंकि अपनी जो ये जो अलाइनमेंट है, अब इसमें इतनी एनर्जी आएगी कि वो अपनी अलाइनमेंट बिगाड़ करके रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट्स हो जाएंगे. मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा इसमें. लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर घटाओगे, अगर बाय द वे टेम्परेचर अगर घटाओगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ते सारे, मान लो सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या हो गए, अलाइन हो गए. तो जब सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, है ना. उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं. सो एट द सैचुरेशन स्टेट द Curie law is no longer valid. So what happens, he is telling that at saturation state Curie law is no longer valid. ठीक है ना, VALID. The Curie law is no longer valid.
यू फॉलो दिस वन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन? अगर आप तापमान कम करते हो, इफ यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर, मैग्नेटाइजेशन विल इंक्रीज अप टू पर्टिकुलर सम रेंज. उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर ये उसके बाद क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कम कर दिया और भी कम किया आपने, तो मैग्नेटाइजेशन और इंक्रीज नहीं होगा. सो दैट इज नोन एज द सैचुरेशन.